It's a chilly winter evening in Pune, and we are here at the Pune Book Festival, organized by the National Book Trust and the Ministry of Education. And from what we can see, there's a huge footfall. People are coming in large numbers, and the aim of the event is so as to encourage public reading or public leisure reading. So let's get to the main point. The people who produce the books, the ones who enable this reading, what is going on with them? So we are with the Discovering Zero Foundation, and they have a quarterly publication called Kulfi. This is a magazine that is based around students, around children specifically, in order to attract them to get back to the habit of reading. So we have with us Mr. Dabolkar. Sir, could you tell us a little about the organization and what you're trying to achieve? Okay, so Discovering Zero Foundation is a non-profit organization. It mainly concentrates on library education and for the kids, so that kids comes very familiar with the books and so that the reading culture as such gets promoted. So we publish tri-monthly called Kulfi. Along with that, we conduct some library trainings, and along with that, I am a storyteller as well. So I go across different schools, villages, and tell stories, show books, interact with kids. So there are it has to be an ecosystem to promote books. It cannot be just one thing. Just publishing won't help, or just promotion won't help, or just libraries won't help. It has to be a quality in all the aspects, and then kids will get interested in books. What we can see from here is that the illustrations here are quite beautiful and quite attractive. So how does this work? Like, how do you reach out to authors, or how do you reach out to these artists to come and help you or assist you in making this? Okay, so we have mix of artists. We have some very renowned artists whom we have reached. We have requested them. They are very renowned artists in children's literature. There are some good writers who normally doesn't write for kids, but we have requested them and we have generated some of that kind of literature. We also get literature from kids, so there are some contests that we create, and through that there are very beautiful writing that comes up. Again, we support it with very beautiful illustrations with many renowned artists. And what we consider is literature is not just text. The picture part of it is also in literature. So if you see the table of content in Kulfi, it's always the title, the name of writer, as well as illustrator. So they both create that experience for kids, is what we believe. So how do you approach institutions like schools and facilities? How do they deal with you? How does this whole process work as to? First thing is, we whenever we take Kulfi with us, that itself speaks louder than what we have to say. So when kids see those pictures, when they read through, and so first thing is pictures that attracts kids, and that does our most of the work. And then they slowly starts reading, and the text that is selected is also we had given some pedagogical thought behind it. So what kind of text it has to be? There are some features where there is no text. The entire story, it's wordless books, so the entire story is in illustration. There are some experiments where there are different games that we have designed in that magazine. Those trigger discussion. Those are not like connect dots and things like that. So those triggers discussion with children and whoever is the facilitator, maybe parents, teachers, whoever is working with them. They trigger those that discussion, and that help kids more than just leaving them just बस जाओ उधर और पढ़ते बैठो. That is not going to work. So we approach schools, tell them all these philosophy. Some schools ask us then if we can train, and then we provide that training, that how to create the reading rich spaces, and that has helped many of the spaces. And could you take us through some of these books or the publications that you've had? Right. Like this one here. So yeah, so this one here is Habib Ali's illustration. So the write up with this is very small, if you see. Okay. Okay.
Something is happening, and This is an excerpt from your magazine. yeah, this is from one of our magazine. No, not this one. I guess this one. If you see this one, Okay. so something is happening, and when Shumamsha Dukana. it starts, nothing is written. So it gives opportunity for facilitators to discuss with kids. They generate, guess what is happening, and then kids start speaking, and there are a lot of possibilities that emerge out of this. Hmm. So they are afraid of something, but we are not able to see what they are afraid of. So for can be- that, then again they have to go ahead and read it. Otherwise, it's just a picture. And then there are many such pictures. Now this is Shubhangi Chetan, who is very senior artist. She is based out of Nasik now. Again, this is an illustration for a famous Marathi writer, Vinda Karandikar. So, how to eat mango is a small paragraph that he has written. Amrayog, he says, and for that, this illustration was drawn. So, you can, and without reading, you can guess how to eat a mango. So when you're talking about artists from Nasik, so how is the Maharashtra landscape? So let's say you're reaching out for literature or art from Maharashtra, let's say for assume. So do you see people coming out from rural spaces or backward spaces? How does that happen? Yes. Are you able to find people those who have created such good content? Right. So there are many such writers that we have. So one thing is we believe in three things. One of that is Sauskrutikata is what we say. So diversity is what we believe. So that comes as it comes in different styles of illustration. It also comes in the language that is used. So there are many stories which has dialogues in local dialects. It has many stories right from Vidarbha to Marathwada. Even some there was a story in our first edition that we can see there. There it was the entire story was in Korku, and then there was a QR code given, and people has to go to that QR code, and then they will be able to read in standard Marathi. But in book, they would read in whatever language it has written. So that way we are able to reach to different. Then again, in every story there is mirror effect and there is a window effect. So what we try is each type of kid can get both these effects. So some for one story would provide mirror to some kids and window for other, but for many kids unfortunately there is hardly any mirror effect available. So we try to give such stories as well. So if you see, there is one Raju Baviskar. So this is again a serious his autobiography. From that we had created a piece for kids. So it is written for adult audience. But that particular piece, from his childhood, so he was a kid of a bandwala, and so different kind of children should be able to connect to. So you're trying to reach out and tell them that there are people coming from And- varied audience and varied backgrounds, and we have to respect them. Yes. So basically that. So kids are kids. They come from different backgrounds, and but at the end of the day, they are living in the same world as we are living. So for them, creating a very childish thing is of no use. So that's what we believe. So yeah, that was Mr. Dabholkar from Kulfi, a quarterly magazine, and as you can see, they have quite beautiful illustrations. And what they're trying to do is, create a space for children to think critically, to think as adults, and not coddle them. So yeah, it was great speaking to you. Thank you for your time, sir. Thank you. Navarun, and we have with us Mr. Sanjay Joshi, who's also the founder and the publisher. So let's talk to him. Hello, sir. How are you doing? Hello. I'm fine. Thank you. So, sir, my question foremost should be about how the publishing industry is functioning now. So, I'm trying to understand how publishing is basically functioning in the world where we are feeling that the reading habits are going down. Even if we do not have the accurate data point, but we can see around us how people have been shifting to the digital space and all. So, how important does it become for a publisher to establish themselves as a producing books where people can come and read, and what as a publisher do you intend to do in order to bring people back or keep the presence that there is for books for leisure reading?
Okay. First of all, thank you, Sakal, for giving us chance. Uh, Let me first start with the challenges. So the main challenges are the cost. After the Ukraine war, you- the cost of the prices paper is very high. It is 1.5 or twice. Twice what it was used to Yeah, right. So production costs it's and it directly control the cost of the book. So it is very difficult to survive. Secondly, the postal services they have a very interesting, very unique postal services for the publication printed books. This So is a government of India G- initiative. uh, and postal government of India's postal service has the most wider network. So what they did year back, they stopped the printed book service, and suddenly if you say 250-gram packet, we generally send in 17 rupees. So now there is no option. Okay. So the publisher who are publishing small books means in size. Size, Ah, small they are numbers, important books pages. Yes, important. of low price. So there is no scope for the low price books. So with that, your reach will be suddenly there is a drop in your reach. So institutional also we have a very vast network of very interesting network of post offices, but there is no separate line for the booksellers. Books. So also, could you take us through your publications? Like, what kind of content or what kind of literature do you want to produce? What are the So we started with any regular publisher with poetry. So we publish this very important complete works of Viren Dangwal. Then this book. Then suddenly there's a shift in publication, and we started focusing on non-fiction. So now Was our there a reason behind that? because no one is publishing non-fiction like this book 4 book on Cosmos. It came out after 20 years, and there are lots of publishers. If you ask big publisher, do you have a book 4 books on Cosmos, they don't have. So no one is publishing on very few publishers publishing on popular science. So then education, and we are a very small publisher. We have only 67 books, but we have 6-7 books on social movements. We have a very interesting Kisan movement, but there are only 2 books in Hindi. One published by Navarun and another published by Vam Prakashan. So that was the focus, because otherwise people are publishing poetry and prose. So let's focus ourselves into the new area. That's why our tagline is a publication collective of new ideas. So, and like we have a different kind of collaboration. Like you can see these are science poetry posters. So this is made by Bal Vigyan Khoshala. It's a children's lab in Uttarakhand, and friend of mine Ashutosh Upadhyay is the brainchild of this Khoshala. So he writes poetry also. He writes science poetry. So he wrote science poetry for us, and then first he did on PDF form. Then our request he gave us rights, and we made it in print. And now it will be available for the school teachers, libraries, and we will also campaign also. So such kind of things we are doing. We are doing also translation, like this book on Palestine. No one is talking about Palestine. So this is a collection of. There's only 2 books in Hindi on Palestinian poem. Otherwise, Hindi has a 1,000 publisher group. And then we are translating one big book by Uma Chakravarti on Pandita Ramabai and her and rewriting history. Pandita Ramabai rewriting history. Then we published this book also on Arab Spring. है ना? This was first published in English. So we are trying to do like we published 3 books on cities.
Jaunpur, Jabalpur, and Allahabad. So, any literature or any publication is fair, uh, uh, be bright or sharp, if it has lots of different kind of genres. No? You don't only read poetry and prose. So, there are very few books on how a motor works. Like in English, you have lots of primers. So there is a lots of new work, not new work, lots of work has to be done in the publication, which is unfortunately not happening. And so, how else would you want this to be? What things do you think could be done better for you or the people? Like I think when we're saying we're trying to encourage public reading. I think like this kind of book fair, which is very well managed. Like we are getting water bottles, interesting cultural program, ample space to walk. It's a comfortable space, and a complete forge of volunteers asking you every in every interval in 3 hour for is there any problem. Also, it has to be free. Was it not entry free? Entry free is opening gate to lots of people. 20 rupees is not important for many people, but 20 rupees is very important for few people. And books are very important for those few people also. So I think this is the Delhi book fair should take lesson from Pune. Very interesting, very impressive footfall. Also, library purchase should be transparent. There should be a team of local intellectuals who should be part of library purchase. What is the library acquiring? What you are acquiring? Because in most of the government library, it is filled with trash. So, and that money is not. It's my money, no? It's your money. So I think if you really want to educate your people, if you really want to implement your constitution, then you have to be little accountable and little honest. है ना? Then I think new publication will, new thing will come out, because I can't work with plain air. Na? I need You need substantial support. the basic है ना? subsistence. Because I have to pay my printer, I have to pay my binder, I have to pay my typist, I have to pay my designer, and also I have to save some money for my bread also, sometime butter also, jam also. So I think institution has to be more accountable, and local people should catch hold of the local MLA, local MP. What are you doing? Why our library is not having Pula Deshpande's book? Why not we have Shivaji Savant? Why we not science book? Why we not have encyclopedia? So if this will, if these things will be applied, then it will be a better world for the publication also. So that was Mr. Sanjay Joshi for Navarun, and thank you, sir. Thank you for giving your time and giving us the insights that you have. It was pleasure meeting you. Same here. Thank you both for taking your time and giving importance to Navarro. Thanks a lot. हम अभी हैं नितिन के साथ, जो कि राज कॉमिक्स के यहाँ पे एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट या मैनेजर काम करते हैं. तो नितिन, हमको थोड़ा राज कॉमिक्स के बारे में बताइए. ये जो किताबें, छोटी सी पतली सी किताबें आती थी, हमने स्टेशन पे देखी हुई थी पहले, अभी उसका क्या हाल है? आपका पब्लिकेशन का कैसा चल रहा है? क्या सोच है उसको अभी तक बरकरार रखने में, और आगे का क्या है? सर देखिए, राज कॉमिक्स जो है एक कॉमिक पब्लिश करते हैं, पब्लिशिंग हाउस है, और ये 90s से है. इसके कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर क्या, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, पर कुछ कैरेक्टर हैं जो काफ़ी फेमस है, लोगों का बहुत प्यार मिला है और अब तक प्यार मिल रहा है. जैसे मैं बात करूं नागराज की, ध्रुव की और डोगा की. ये 90s में हर रेलवे स्टेशन पर ऑल ओवर इंडिया हमने कवर कर रखा था. बहुत अच्छा प्यार मिला. इसकी स्टोरीज़ जो है, ये जो अभी अगर आप बात करें मार्वल DC की, तो ये तो अभी बाद में आया है. इंडिया में राज कॉमिक्स
इससे पहले काफ़ी पहले वो पॉपुलर था। और जो है इसकी बुक्स जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे ये डोगा है, तो ये अभी हमने इसका साइज़ जो है बड़ा कर दिया है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो गया है, पेपर क्वालिटी में फ़र्क आ गया है, बड़ा साइज़ हो गया है, पेपर बड़ा हो गया है, अच्छा हो गया है। तो आज भी जो है टाइम बढ़ गया है, पर ऐसा नहीं कि कॉमिक्स ख़त्म हो गया, कॉमिक्स आज भी आ रही है, न्यू कॉमिक्स हम लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि जो मार्वल और डीसी जो है ये अभी आए हैं, तो बट देखा ऐसा जाए तो उनका जो स्पेस है वो लोग ने इंडिया में या काफ़ी ग्लोबली उन्होंने बहुत स्पेस कैप्चर किया हुआ है। जो रीडरशिप शायद से राज कॉमिक्स को पहले मिलती थी वो मतलब अभी कैसा वो कम हुआ है। तो उस चीज़ को जैसे आपने भी कहा कि आप नए नए कॉमिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं नए कैरेक्टर्स के साथ, उसको तो ये कैसा हो रहा है कि मतलब ये जो मार्वल और डीसी जो मार्केट खा रहे हैं या उनके हिसाब से जब आप उनको compete करने की सोच रहे हैं, तो क्या ऐसा चेंज आप ला रहे हो कि आप उनके साथ compete करने का रख रहे हो और मार्केट में अपना एक स्पेस बना पा रहे हो? सर देखिए, मार्वल डीसी लोगों ने पढ़ा, उनको अच्छा लगा, उसके ही अगेंस्ट हम जो है अल्फ़ा कॉमिक्स लेकर आए हैं। उससे बेस्ट कैरेक्टर है हमारे पास। और मार्वल डीसी आप कहीं ना कहीं देखें कि एक लिमिट है उसकी भी, और अभी उसको टाइम लगा है, मार्वल डीसी को भी काफ़ी टाइम लगा है उस तक पहुंचने में। पर अल्फ़ा कॉमिक्स हमने जितने कम टाइम में हमने उसको जितना प्यार मिला है वो एक बहुत बड़ी बात है। अल्फ़ा कॉमिक्स में जो कैरेक्टर है हमारे, उसको लोग उसके इश्यूज़ का ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे मार्वल डीसी का अभी कर रहे हैं। पर हाँ, अल्फ़ा कॉमिक्स अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। हम ट्राई कर रहे हैं, नॉर्मल बुक स्टोर्स पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन तक कॉमिक्स पहुंच रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। हम बुक फेयर अटेंड करते हैं और भी इवेंट हम अटेंड करते हैं। हमारी जो बुक्स है वो स्कूलों में भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं अभी इस पे एनिमेशन की भी बात चल रही है, ट्राई कर रहे हैं हम एनिमेशन बनाने का भी। आप अगर इसके सोशल मीडिया हैंडल पर देखें, यूट्यूब पर देखें, इंस्टा पर देखें अल्फ़ा कॉमिक्स के नाम से, तो उस पर भी कुछ एनिमेशन अवेलेबल हैं। और आगे इसको एक बड़े एनिमेशन, एक मूवी फॉर्मेट में लाने के लिए काम किया जा रहा है। तो जैसे कि ये जो मूवी ये एक अलग फॉर्मेट आप अपना रहे हैं ताकि आप वो स्पेस में कैटर कर सकें, तो उसी तरह जब पब्लिकेशन की बात आती है, जैसे आपने ये कहा कि पेपर का क्वालिटी हम लोगों ने आपने बढ़ाया है और साइज़ बढ़ाया है, तो इसमें एक कॉस्ट आ जाता है जो कि अभी इसका मैं देख सकता हूँ 700 रुपये है। तो जो आप जिस बेस को आप कैटर कर रहे हैं, जो चिल्ड्रन बेस है जो कैटर कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब 25 रुपये में एक टाइम पे उठाता था, या शायद से अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ भी गया होगा, बट 700 रुपये एक बहुत बड़ा जंप हो जाता है कभी मतलब लोगों के लिए। तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये जो प्राइस पॉइंट का आप सेट कर रहे हैं उसका कैसा देखते हैं? सर देखिए, कॉमिक्स मैं मानता हूँ जो स्टार्टिंग कॉमिक्स थे उनके रेटों में अभी के रेटों में फ़र्क है। पर अगर आप किसी और प्रोडक्ट पे देखें या किसी और चीज़ों पर देखें, तो रेट सभी चीज़ों में बढ़े हैं। आप देखिए, एक कॉमिक्स बनाने में जो इसके आर्टिस्ट हैं, एक कॉमिक्स बनाने में काफ़ी कॉस्ट आता है। सभी कॉमिक्स बनाने में राइटर का पार्ट होता है, ड्राइंग का पार्ट होता है, इंकिंग का होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है। पहले के आर्टिस्टों का रेट अलग था, उनके रेट में फ़र्क आया है। पहले का जो पेपर का रेट था और अभी के रेट में काफ़ी फ़र्क है। और पहले की जो पेपर क्वालिटी थी वो और अभी की पेपर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। अभी आर्ट पेपर में कन्वर्ट कर दिया है। पेपर का साइज़ पहले छोटा था, अभी बड़ा कर दिया है। पहले जो कॉमिक्स आती थी वो नॉर्मल एक प्रिंटिंग और कलर था, कुछ ज़्यादा अगर हम कहेंगे कि नॉर्मल कॉमिक थी। अभी के टाइम पे उसमें यूवी ऐड कर दी है, गोल्ड लीफिंग ऐड कर दी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से पेपर पे हमने जो अपडेट चीज़ें जो अभी टाइम के साथ जो अपडेट होते जा रहा है वो चीज़ें हम कॉमिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर हम अभी के टाइम में अगर कॉमिक्स में ये चेंजेस ना करें तो कॉमिक्स की कॉस्ट बेशक कम रहेगी, पर कहीं ना कहीं जो अभी रीडर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि टाइम इतना डेवलप हो गया है, आज की जनरेशन हो गई है, उनको कॉमिक्स में भी अपडेट चाहिए। तो अपडेट के साथ साथ प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है। और एक जो चीज़ है, जब मतलब कॉमिक्स का बात आता है तो वो एक स्पेस था, एक टाइम था जहाँ पे एक डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, जहाँ पे बच्चे अपना स्कूल ख़त्म करके जो भी ख़त्म करके वो लोग अपने लीजर में कॉमिक्स उठाते थे। वो एक मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहता था। बट अभी जब सबके पास एक फ़ोन है और सब एक डिजिटल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं, तो कॉमिक्स को आप उस स्पेस में आप अपना खुद का कैसे मुकाम बनाने की कोशिश करें? सर जैसे कि 90s में जब इतना डिजिटल नहीं था, इतना फ़ोन्स और टीवी वगैरह नहीं था, तो
लोग जो है कॉमिक्स पढ़ते थे। अभी के टाइम में चीज़ें बदल गई हैं। हर अभी बच्चे से छोटे से छोटा बच्चा जो है वो फ़ोन चलाता है, जो कि उसके लिए सही नहीं है। इसी चीज़ को हम पेरेंट्स को बताते हैं कि अगर आप फ़ोन्स अगर आपको बच्चे से हटाना है तो कॉमिक्स दिलाइए, डेफिनेटली आपका बच्चा जो है कॉमिक्स पढ़ेगा तो फ़ोन छोड़ देगा। तो हम पेरेंट्स को जो है कैच करते हैं, उनको बताते हैं कॉमिक्स के बेनिफिट। ऑलरेडी जो राज कॉमिक्स के जो रीडर हैं उनको पता है कि कॉमिक्स के बेनिफिट है, और हमारे कस्टमर हैं जो एज अ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कॉमिक्स दिलाते हैं और उनको उसका बेनिफिट भी देखने को मिला है। तो हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो ऑलरेडी अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो फ़ोन से दूर रहे और वो कॉमिक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखा है, रीडरशिप में कुछ बदलाव आया है? मतलब बच्चे उतना, जैसे कि ये पुणे फेस्टिवल हो गया, इधर आपको कैसा रीच मिल रहा है? लोग आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं? सर देखिए, जो कॉमिक्स है वो एक अलग ही कैटेगरी है। तो जब हम कॉमिक्स उसको उनको दिखाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि टाइम के साथ हमने चीज़ें अपडेट करी है। हमारे पास सभी एज ग्रुप के वाइज कॉमिक है, गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए है, और हमने अल्फ़ा कॉमिक्स में सभी कैरेक्टर को इंक्लूड किया है। एक सभी जो अलग अलग कैरेक्टर है, हमने ऐसा सोचा है कि कोई भी कस्टमर है जो उसका फेवरेट हो, जो उसका एंगल हो कि मुझे एडवेंचर पसंद है, मुझे एक्शन पसंद है, मुझे हॉरर पसंद है, तो ऐसे ऐसे टाइटल हम अल्फ़ा कॉमिक्स में लाए हैं। तो जब कस्टमर हमारी शॉप पर आता है तो कभी वो नाराज़ होकर नहीं जाता। वो जो मांगता है, हमारी कोशिश रहती है हम वो कस्टमर को दे पाए। तो लोग आते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, और हमारे पास वो कॉमिक्स, उस तरीके की कॉमिक्स अवेलेबल होती है। और रिस्पॉन्स अभी पुणे बुक फेयर में भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, और मुझे खुशी हुई कि पुणे में भी और बुक फेयर में जो है कॉमिक्स और लोगों का इतना प्यार मिला। ठीक है, थैंक यू नितिन, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्फ़ा कॉमिक्स आगे बढ़े और हम भी और फिर से कॉमिक्स पढ़ पाएँ। थैंक यू। थैंक यू।